Hello, dear students. Hope you all are doing good. And most of you might be busy with the preparation of exams. I hope so that you are busy studying and all that. All right. So, this specific video I am composing in order to have a better understanding of the syllabus, and there will be a discussion on previous year papers too, right? There is so much of confusion that what is our syllabus, right? And this syllabus is for BA English Literature first semester, and the discussion will be made on previous year paper. See, this is our second batch of NEP according to the NEP, new education policy. So yes, there is confusion among students that how the structure of paper is going to be, or what kind of questions they are going to ask in the exam, as there is no previous year question paper there in the website of Kumaun University. All right, so let's just begin it. All right, so as you can see here in the screen, I have uploaded a picture of the syllabus. Let's have discussion on that. Okay, so the total number of credit you have in this paper are 6. Okay, so just keep this thing in your mind that you have to at least score 33%. Okay, and this 33% is the mixture of external and internal marks. Okay, so both of the marks, they will be counted equally, and you have to pass in both of the external and internal exams. Okay, you have to pass both of this. So maximum marks there are 100. Okay, so 25 marks it is of internal, right? And 75 marks, this is what you are going to receive in the whole question paper that you are going to receive. The written exam basically is of 75 marks. All right, so let's just discuss the syllabus. We have already completed syllabus in the class. For those students who are the regular in the class, they already know the syllabus, and they have I guess they have made notes of all the things that we have studied in the class, and have dedicated 3 to 4 classes only to how to compose notes. Okay, classes on note making. Okay, so just I guess you will keep this thing in your mind, and you will be in contact with such students because exams are approaching, right? So yes, it's the high time that you should compose your notes. You should start studying because English is not that difficult, but it is not that easy too. Okay, so your reading skills, your writing skills, okay, how you present yourself in the answers, okay, your writing skills, they are very necessary at a time, right? So okay, let's just discuss what is there in the syllabus. So the very first unit, that is introduction to genre, right? So in these genres, we have poetry, drama, essay, novel, novella, and short story. Okay, this is unit first. And unit second is element of short story. Okay, so what are the various element of short story? Plot, theme, characterization, and narrative techniques. These are the elements of short story, and we have 2 short story in our syllabus. First, the last leaf and the lament. Okay, these are the 2 short story that we have in our syllabus. Okay, so yes, you are going to receive a long question maybe on what is a short story and what are the various element of short story, or in these 2 short story that you have in your syllabus, you are going to receive long questions on that too. Okay, this is a possibility. Third unit we have is the type of prose and prose style. Okay, so prose and prose style, we have autobiography, biography, memoir, travelogue, and essay. And there are various literary devices like point of view, imagery, antithesis, aphorisms, and all that, humor and pathos. Okay, so for literary devices, I think there will be short questions on that. You will be asked to write short notes on these the following questions or following points they will give you, and you have to write short notes on that. Okay, so this can be a thing.
Okay, there are various types of questions that you receive in your exams, and that we will discuss later. Okay, so this is unit 3rd, prose. And unit 4th, we have 3 prose, 3 essays, right, of 3 writers: Francis Bacon, Of Study; Charles Lamb, Dream Children; and Oliver Goldsmith, National Prejudice. All these 3 essays we have already completed in the class. Then we have unit 5th, that is Virginia Woolf, Profession for Women. This also we have completed in the class. So yes, Virginia Woolf is, much important, very important, most important writer. Bacon again is most important. Lamb is, again, important writer. So Bacon, Virginia Woolf and Lamb, you should focus on that. Okay, and I'm not saying it that okay yehi wale jo writers hain, they are going to come in the exam, right? But these are the important writers. एक तरीके का पैटर्न हमने देखा है that फ्रांसिस बेकन से या लेम्ब से या वर्जीनिया वुल्फ से क्वेश्चंस आ रहे थे, बिकॉज ये जो एसेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट? सो येस, गो थ्रू दोज एसेज. Okay, I guess composed a video on of studies, I guess so, right? So just go through the channel, and if you have time, if time permits, okay, just watch those lectures. But these lectures are pretty long, I guess. 1 hour lecture, that is Francis Bacon. Anyways, okay. And unit 7 is APJ Abdul Kalam and Amartya Sen, these 2 essays. Okay, again you have to read these essays. All these essays you have to read it, because questions, they are originated from the paragraph kind of questions. They originate from anywhere between essays. What they are going to do, they are going to take 3-4 lines from anywhere from the essays, and you have to explain those essays. Okay, so we are going to see that, we are going to watch that what are the certain kind of questions they are going to ask. All right, so I guess there is no confusion regarding the syllabus, right? So what you are going to do, since you're left with a limited number of time, so just try to focus on the chapters you are you have read a bit on. I guess you have read about genres. Okay, genres are easy, and element of short story is easy. Just make sure that you at least know few things from each writers. Okay, if when it comes to unit 1st, if there is poetry, that you have this basic understanding of what is poetry, what is drama, what are various type of essays, what is novella and short story. All right, and similarly with unit 2nd, again become very important. So unit 2nd may say you should know that what is short story, what are various elements of short story, and at least you know the summary of these 2 short stories. Because jab long question you are going to attend, right? So for that long question, at least you can write the summary of these 2 these 2 short stories, right? तो इस चीज़ पे focus आप लोगों का रहेगा, that you should go through the summary of at least these short stories. Similarly with unit 3rd, prepare at least literary devices, क्योंकि literary devices, they are going to come in the short notes. I guess they are, I don't promise that they will come, but yes, there might be a possibility that these things will come, right? Similarly with prose and prose style. Okay, and just go through the summary, read these essays, right? अब जितना time बचा है उसमें just go through these essays, go through at least the summary of these essays, have this basic understanding that what this whole essay is all about, right? ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के अंदर होनी चाहिए अबाउट ऑल दीज एसेज, क्योंकि ऐसे जो हैं पूरे 6 ऐसे आपके सिलेबस में हैं. एटलीस्ट यू शुड प्रिपेयर 4 एटलीस्ट, राइट? एंड these 6 should be from various chapter, at least 1 from each chapter. All right, so this should be your focus for the exam. Okay, so let's have the discussion on previous year paper. Okay, I'm very thankful to Himani for providing me this paper, right? Himani is a pretty bright student, so all those first semester students, at least kuch guidance usse le lo. She's pretty bright student. Okay, so let's discuss this, how this paper is divided. Okay, let's just discuss that first. Okay, ये जो पूरा पेपर है, it is divided into 2 sections. Section 1, that will be short answer type questions, and section B, that is long answer type questions.
ओके तो इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पहले पढ़नी है, देन ओनली स्टार्ट इट। ओके ऐसे नहीं करना है कि बस यू रैंडमली यू स्टार्ट एनीथिंग, है ना, क्वेश्चंस देखे एंड तुमने लिखना स्टार्ट कर दिया और अपना टाइम वेस्ट करा, ऐसे मत करना। जस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन, व्हाट द इंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट। तो सेक्शन ए हम देख रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। एंड एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस। इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे ये जो पेपर है इसमें क्लियरली मेंशन है दैट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस। इन जितने भी पैसेज दिए हैं उनमें से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, और वो जो 3 पैसेज हैं वो 6 मार्क्स के हैं, यानी कि हर एक पैसेज 6 मार्क्स का है, तो टोटल 18 नंबर तो पैसेज ही कवर कर रहा है। एंड सी पैसेज वाले जो क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं, राइट। ऐसे में से या शॉर्ट स्टोरी में से कहीं से भी बच्चों 3-4 लाइंस या 5-6 लाइंस वो ले लेते हैं एग्जामिनर, एंड उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है ना। ये रेफरेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, आई हैव कंपोज्ड अ वीडियो ऑन दैट, जस्ट गो थ्रू दैट, राइट। in order to receive good marks, just go through that video lecture. All right, I'm saying that again, just go through that, because सब बच्चों को नहीं पता that how to attempt these passage वाले questions, right? So go through that video, have this better understanding that how you have to compose references, how you have to compose the context and vice versa, right? Okay, so let's see. Let's just take few examples, right? So you can see in the screen the very first question. What they have done, they have given us like about 6 to 7 lines, and you have to understand this thing that ये जो पैसेज है, यू हैव टू मेक फ्यू पॉइंट्स, है ना। तुम्हें कुछ इस तरीके से पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे या कुछ इस तरीके से अपने लिए आइडियाज़ सोचने पड़ेंगे दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो पूरा पैसेज है वो किस ऐसे से लिया हुआ है या किस स्टोरी से लिया हुआ है ना। कुछ ऐसे पॉइंट्स बच्चों बनाने ही पड़ेंगे, जैसे फॉर बेकन, वेन एवर यू रीड दी एसेज ऑफ बेकन, सो उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होती है दैट हाउ ही राइट, he always add th in many words, or he will use this kind of language, dot, right? इस तरीके की कुछ लैंग्वेज है जो वो यूज़ करता था। तो हैव दिस थिंग इन योर माइंड दैट अगर इस तरीके से कुछ वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो आप उसे स्पॉट कर लो दैट ओके वो जो ऐसे है वो किसका है, बेकन का है। यूजली ही डू दैट, ओके। अब जैसे सेकंड पेपर हम देखते हैं, चिमनी पीसेज लिखा हुआ है, रॉबिन रेडब्रेस्ट लिखा हुआ है ना। तो ये भी कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि अच्छा ये लैम्प का ऐसे है ना। अब देखो थर्ड वाला जो ऐसे है, यहाँ पे एंजल इन द हाउस, राइट। वर्जीनिया वुल्फ का जब हम ऐसे पढ़ रहे थे तो एंजल इन द हाउस ये एक मेटाफोरिकल फ्रेज है ना। मेटाफोरिकल जो फ्रेज था जो विक्टोरियन टाइम पे चलता था, एंजल इन द हाउस का, है ना। तो ये हमने उस समय पढ़ा था। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो इंडिकेट करें आपको, जो आपको आपके दिमाग में स्ट्राइक करें कि ओके दैट लाइन्स दे हैव टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऐसे, और आप क्या करो उसको एक्सप्लेन कर पाओ, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें अपने माइंड में बच्चों स्ट्राइक करते रहो। एटलीस्ट जब ऐसे पढ़ो तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लाइन्स, कुछ ऐसे वर्ड्स अंडरलाइन कर लो दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट दैट पर्टिकुलर ऐसे इज टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऐसे, दीज लाइन्स दे आर टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऐसे। कुछ इस तरीके से चीज़ें करना, है ना, जो तुम्हें क्या करें, कुछ ऐसे हिंट्स दे पाए जिससे तुम्हें पता लगे कि ओके ये जो पर्टिकुलर ऐसे है वो इसमें से लिया हुआ है, एंड वाइस एंड वर्सा, इस तरीके की चीज़ें आप ओके। तो ये चीज़ें माइंड में रखना, है ना। अब यहाँ पे हम एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कलाम, राइट। तो ये थोड़ा सा कुछ ऐसा वर्ड है जिससे आपको ये पता चलता है दैट येस डेफिनेटली ये जो है अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम का जो ऐसे है वहीं से ये बेसिकली जो लाइंस हैं दे हैव टेकन फ्रॉम दो दैट पर्टिकुलर ऐसे, राइट। सो यस, ऐसी कुछ चीज़ें बच्चों ध्यान में रखना। जैसे ये टैगोर है, अगेन यहाँ पे एक और हिंट हमें मिलती है, टैगोर का मेंशन यहाँ पे आ जाता है। तो अगेन यस, सो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उनको इंडिकेट करने की कोशिश करो। ऐसे ये कैसे होगा, जब यू विल रीड दी ऐसे, है ना। एटलीस्ट एक बार यू हैव टू रीड इट। जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड करी हैं दे वेरी वेल अवेयर अबाउट दीज एसेज, एटलीस्ट दे हैव रेड द टेक्स्ट वंस, सो आई गेस they understand that okay that particular lines have in which essay, in which particular story those particular lines occurs, right. So they have this understanding. I'm just hoping that okay. So if
उन बच्चों ने भी रिवाइज नहीं किया है तो दे विल बी लाइक दे ऑल्सो हैव दिस ज़ीरो आइडिया. ओके, सो येस, इफ रिविजन इज़ नॉट द फ्रीक्वेंट थिंग इन योर लाइफ तो फिर यही होगा दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग. ओके, सो एनीवेज, सो बी क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन 300 वर्ड्स. ओके, तो जब भी बच्चों 300 वर्ड्स की लिमिटेशन दी होती है तो जस्ट राइट इन दोज वर्ड्स ओनली. ओके, दैट पर्टिकुलर वर्ड्स ओनली. 300 वर्ड्स बोले हैं तो 300 वर्ड्स में ही आपको अपना क्वेश्चन जो है वो फिनिश करना है, राइट. सो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, मेमोर क्या होता है, प्लॉट क्या होता है या नोवेला क्या होता है, ऐसे इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट ऑल्सो. ओके, तो अकॉर्डिंगली करना है, वर्ड लिमिट दी हुई है तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग करना है. बाकी पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे वो रेफरेंस कई बार हमने डिस्कशन किए हैं इसके ऊपर क्लास में. और अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड नहीं करी है, फ्यू ऑफ द यू हु हैव नॉट अटेंडेड द क्लासेस, so just go through the lecture that I have composed on paragraphs type questions, right. So let's just jump into section B. This is the long answer type questions. Okay, so you only have to attempt 3 question from the given options. अब देखो यहाँ पे मैं 3 बोल रही हूँ, अगर एग्जाम में जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है. ऐसे नहीं करना कि अच्छा वीडियो में तो 3 क्वेश्चंस बोला है तो हम ज़्यादा कराए, या वहाँ पे कम बोला था या हमने ऐसे कर दिया. दिस इज़ ओनली सैम्पल पीस, ऑल राइट. सो जितने क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं दीज आर ओनली सैम्पल्स बच्चों. तो आप लोग बहुत होशियार हो ना आप लोग, बिकॉज आप लोग क्या करते हो, देखते बिल्कुल लकीर के फ़कीर की तरह काम करते हो. दैट ओके, ये बोल दिया तो यही आएगा, ऐसे नहीं होता है. दिस इज़ ओनली सैम्पल क्वेश्चंस, राइट. क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, ये दिस इज ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट वी आर डिस्कसिंग. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है दैट इज गोइंग टू रिपीट. मे बी हो सकता है रिपीट हो जाए या मे बी हो सकता है नहीं हो. तो ओके, सो यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन आए थे. एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को तो गो थ्रू कर लेना, राइट. जो प्रीवियस ईयर में आए थे, कई बार रिपीटेशन हो जाती है क्वेश्चंस की. ओके, एंड वैसे भी सेक्शन वाइज जब आप पढ़ोगे तो यही सारे क्वेश्चन बच्चों बार बार रिपीट होते हैं. ओके, डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा एज अ जॉनरा, राइट. अगेन ड्रामा क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उसके बारे में आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने. एंड माइंडेड, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है तो सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली. ओके, द आइडल लेंथ इफ आई विल से, है ना, ये डिस्कशन हमने कई बार क्लास में भी किया है. 2 चीज़ें होती है बच्चों, एक होती है क्वालिटी एंड सेकेंड इज क्वान्टिटी. ओके, आप दोनों जो चीज़ें हैं आपस में प्रोपोर्शनल हैं. आपकी अगर क्वालिटी अच्छी है, यानी कि वट एवर मैटर, वट एवर कॉन्टेंट यू आर राइटिंग, इफ़ द क्वालिटी इज़ गुड, तो आप क्या करेंगे, आप क्वांटिटी लेस कर देंगे. गेटिंग इट. 15 नंबर के क्वेश्चन के में हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, यानी कि वट एवर यू आर राइटिंग रियली गुड, तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी. ओके, यही बस ट्रिक है. अगर आप नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं अच्छा लिख पा रहा हूँ, तो यू हैव टू इंक्रीज योर योर क्वांटिटी. गेटिंग इट. या तो क्वालिटी अपने आंसर्स की अच्छी करो. ओके, इट शुड बी वेल रिटन, it should contain at least definitions, it should at least cover everything which is asked in the question. अगर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, it should have a good introduction, it should have a good conclusion. अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो that means कि आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो you can decrease the quantity. लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हो रही है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा. ओके, सो दैट आप अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन कर सको, राइट. तो यही लॉन्ग क्वेश्चन में ट्रिक होती है. ओके, सो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, तो यू हैव टू राइट. ओके, एंड आर्ट्स में तो आपको हैबिट बनानी चाहिए ज़्यादा लिखने की. फर्स्ट डे से मैं ये चीज़ आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट आपको अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी चाहिए, आपको अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज बहुत लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारा लिखना होता है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि ड्रामा का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पूछा है. यू हैव टू make sure that you in your answers you mention all these things, है ना. ड्रामा का ओरिजिन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, एंड ऑल दैट. अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या आ रहा है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी. ओके, शॉर्ट स्टोरी के की एलिमेंट क्या है. एंड यहाँ पे देखो एक चीज़ अच्छी लिख दी है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद द रेफरेंस टू द टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड इन योर कोर्सेज. अगर इस तरीके से कुछ चीज़ें लिखी हैं तो बेटा ये तो बहुत बढ़िया है. in order to explain that what short story is, you can write summary of that short story in there, है ना. क्योंकि शॉर्ट स्टोरी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो शॉर्ट स्टोरी में दिखते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें आप, ये सब चीज़ें वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, राइट. फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्टाइल ऑफ लेम इज अ केमिकल मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट स्टाइल, कमेंट ऑन दैट द स्टेटमेंट.
बेसिकली इस क्वेश्चन में वो क्या करने को बोल रहा है, ही इज सेइंग दैट यू हैव टू राइट अबाउट द राइटिंग स्टाइल ऑफ चार्ल्स लैम्ब, है ना। और हर एक ऐसे में अगर एक किसी भी नॉवलिस्ट का आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो बच्चों, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, चाहे इवन पोएट का भी आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो, राइटिंग स्टाइल के बारे में एक पॉइंट आप ज़रूर बनाएंगे। ओके, थोड़ा सा रिसर्च करो और अपने नोट्स में राइटिंग स्टाइल हर एक ऐसे इसका आपको लिखना है, क्योंकि जो बेकन है, राइट, ही हैज़ हिज ओन राइटिंग स्टाइल। ऐसे लेम्ब है, लेम्ब हैज़ हिज ओन राइटिंग स्टाइल। वर्जीनिया वुल्फ अपने तरीके से लिखती हैं। हर किसी का राइटिंग स्टाइल जो है वो अलग है, कलाम अलग तरीके से लिख रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट दैट हाउ अ पर्टिकुलर राइटर इज राइटिंग, राइट। तो फोर्थ क्वेश्चन तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली, है ना, कि लेम कैसे, देर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट स्टाइल्स. So you have to explain that. Again, you have to explain that with reference to the essay that been prescribed in your syllabus. Again, you have to write that. Okay, fourth हम क्या देख रहे हैं, write a critical appreciation of Virginia Woolf's profession for women. Okay, this is a good question. This is a very easy question. Profession of women में क्या, what it is all about. एक critical appreciation आपको इसका करना है. Critically you have to examine all the points that are there in the profession for women, right? इस तरह के question बहुत ज़्यादा easy होते हैं because ultimately you have to write a good summary, a good critical analysis of that particular essay. Right, and yes, last question इसमें क्या दिया हुआ है, discuss the theme of patriotism beyond politics and religion. Yes, this is also a very easy question, right? Themes, again, themes एक ऐसा point है that you have to write in your answers. किसी भी ऐसे में अगर लिख रहे हो तो उसमें थीम्स आपको पता होने चाहिए, सिंबल्स क्या यूज़ करे हैं ये पता होने चाहिए, मोटिव्स वगैरह ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर इफ़ देर आर एनी, राइट। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर कहीं पे थीम्स हैं, यूजुअली हर एक ऐसे में कोई ना कोई थीम होती है ना। सो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे एंड यस, मेड योर नोट्स अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, राइट। सो यस, दीज आर सम एग्जाम्पल्स दैट किस तरीके का क्वेश्चन बेसिकली आने वाला है, क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है एग्जाम में, राइट। एंड आई हैव दिस हाई होप दैट यू ऑल आर गोइंग टू परफॉर्म रियली वेल इन द एग्जाम, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय.